So yes, students, once again a very warm welcome to today's class. How are you all? Hope सब ठीक हो आप लोग एकदम अच्छे से and you are studying hard too, right? So in yesterday's class we had started the chapter that is chapter number 6, The Making of a Scientist by Robert W. Peterson, correct? And two parts of it were completed yesterday almost, and the remaining part we are going to complete in today's class. So हमने कहाँ तक कंप्लीट किया था? वी हैव कंप्लीटेड टिल द पॉइंट यहाँ पे उन्होंने बहुत से प्रोजेक्ट्स को टेक ओवर कर लिया था, बहुत से एक्सपेरिमेंट्स उन्होंने कर लिए थे. एंड द लास्ट वन विच वी डिड वाज कि Ebright proved that viceroy butterflies look like the monarch butterflies because monarchs didn't taste good and viceroys on the other hand tasted very good. ठीक है, they were liked by the birds, so they were not left. birds आती उन्हें अटैक करती, उन्हें खा के चली जाती. So that is why they started copying the monarchs because अगर वो monarch जैसी लगेंगी तो birds will see that ये तो monarch हैं, they are not tasting good, so वो उनको छोड़ के चली जाएंगी and they will not be killed. And this exceptional discovery won him a prize and a huge recognition. So this was a great. हम भी देखे तो according to us also this is something very amazing. So now in the next part जो हम आज पढ़ेंगे, यहाँ से जहाँ हमारा अभी टेक्स्ट आपको विजुअलाइज्ड है, यहीं से हमारा नेक्स्ट पार्ट जो रिमेनिंग है वो स्टार्ट हो रहा है. सो इट्स ऑल अबाउट नाउ सेकेंड ईयर इन हाई स्कूल एंड Ebright began searching an anonymous harmony in the gold spots of the monarch butterflies. जो monarch butterflies होती हैं उस पे गोल्ड स्पॉट्स होते हैं. सो फ्रॉम दो स्पॉट्स उन्होंने वहां पे डिस्कवर करना शुरू किया है a discovery of a hormone in those gold spots. And in the senior year he went a step further. एक और step further गए. He grew cells from the monarch's wings in culture and showed that the cells would divide and develop into a normal butterfly wing scale only if they were fed on the hormone from the gold spots. So such an amazing discoveries have been done by the scientists. ठीक है, ये जो प्रोजेक्ट है ना, इट बॉट हिम द फर्स्ट प्लेस फॉर जूलॉजी एट द इंटरनेशनल फेयर and later he studied the X-ray photography of the hormone he found it. Yet another important thing about it, and furthermore, we can say he learned to discover how cells could read the blueprint of its DNA. Okay, so ये चीजें हम जो है आज के हमारे पार्ट में हम स्टडी करेंगे. So now let us start with the text. In his second year in high school, Richard Ebright began the research that led to his discovery of the unknown insect hormone. Okay, indirectly it also led to his new theory of life of cells. So in the second year in the high school, Richard Ebright ने began किया the research that led to his discovery of an unknown insect hormone. And indirectly इसने also lead किया उनको to his new theory of life of the cells. And the question he tried to answer was simple. The question was very simple, which he tried to answer. The question was, what is the purpose of the 12 tiny gold spots on the monarch pupa? जो monarch pupa होता है, उसके ऊपर छोटे छोटे 12 tiny gold spots होते हैं. उनका क्या पर्पस है? There must have been some purpose. अब जो रिचर्ड से ही थॉट की कोई भी चीज होती है ना, इट इज फॉर सम और दी अदर पर्पस. तो अगर बटरफ्लाई के विंग्स के ऊपर ये स्पॉट्स हैं तो दे मस्ट हैव सम पर्पस ऑफ इट. इनका कुछ तो पर्पस होगा. तो एवरीवन अज्यूम द स्पॉट्स वर जस्ट ऑर्नामेंटल. हम यही कहते हैं कि हर बटरफ्लाई जो होती है अपने इन चीजों से, ऑर्नामेंटल चीजों से बहुत ही ब्यूटीफुल लगती है. So everyone else assumed that the spots were just ornament, but Ebright said, ऐसा Ebright ने बोला, but Dr. Uhart didn't believe it. Dr. Uhart ने इसको believe नहीं किया. To find the answer, now to find the answer of this question, Ebright and other excellent science students have first had to build a device that showed that the spots were producing a hormone necessary for the butterfly full development. Now to find the answer, what happened? क्या करना पड़ा? Ebright जो थे ना and the other excellent science students, उन्हें एक ऐसा device बनाना पड़ा which device helped them to show that the spots were producing a hormone that is really necessary for the butterfly's full development. And this project won Ebright's first place in the country fair and entry into the International Science and Engineering Fair. Now ये जो project था, it had won Ebright first place in the country fair.
फर्स्ट प्लेस उनको मिली इस चीन के कंट्री फेयर में एंड एंट्री इनटू द इंटरनेशनल साइंस एंड इंजीनियरिंग फेयर एंड देयर वहां पे उन्होंने जीता द थर्ड प्लेस फॉर जूलॉजी. ही ऑल्सो गॉट अ चांस टू वर्क ड्यूरिंग द समर एट द एंटोमोलॉजी लेबोरेटरी of the Walter Reed Army Institute of the Research. And as a high school junior, Richard E. Bright जो थे ना, he continued his advanced experiments on the monarch pupa. On the monarch pupa, and that year his project was won first place in, we can say, in the country fair and entry into the International Science and Engineering Fair. तो दिस प्रोजेक्ट जो था उनका, इट वन द फर्स्ट प्लेस इन द इंटरनेशनल साइंस फेयर और उनको एक और चांस मिला टू वर्क इन द आर्मी लेबोरेटरी ड्यूरिंग द समर. सो एज अ हाई स्कूल जूनियर रिचर्ड ई ब्राइट जो थे, ही कंटिन्यूड हिज एडवांस्ड एक्सपेरिमेंट्स ऑन मोनार्क पुपा. नाउ दिस ईयर उनका ये जो प्रोजेक्ट था उसने प्लेस इस्टेब्लिश किया अपना फर्स्ट प्लेस इन द इंटरनेशनल साइंस फेयर एंड दिस प्लेस गेव हिम अनदर चांस टू वर्क इन द आर्मी लेबोरेटरी ड्यूरिंग द समर. In his senior year, now when he reached his senior year, जब वो अपने senior year में आए, he went a step further. He grew cells from a monarch's wing in culture and showed that the cells would divide and develop into normal butterfly wings scales only if they were fed on the hormone from the gold spot. And that project won first place for zoology at the international fair, and he spent the summer after graduation doing further work at the Army Laboratory and at the laboratory of the US Department of Agriculture. Now when he was in his senior year, क्या हुआ, उन्होंने एक और स्टेप फर्दर लिया. उन्होंने क्या किया, जो मोनार्क के जो विंग्स थे ना, इन कल्चर उन्होंने उसमें से सेल्स फॉर्म किया और उन्होंने ये शो किया कि ये जो सेल्स है ना, दे वुड डिवाइड एंड डेवलप इनटू अ नॉर्मल बटरफ्लाई विंग स्केल्स ओनली अगर उन्हें हम हार्मोन पे फीड करें. वो हार्मोन जो कहाँ पे मिला था, on the gold spots of a monarch butterfly. ये जो प्रोजेक्ट था, such a difficult project, such a sensible project, इसने जीता फर्स्ट प्लेस फॉर द जूलॉजी एट द इंटरनेशनल फेयर. और उन्होंने अपना पूरा समर जो था ना उसको स्पेंड किया आफ्टर ग्रेजुएशन यही वर्क करते करते, डूइंग फर्दर वर्क एट द आर्मी लेबोरेटरी एंड एट द लेबोरेटरी ऑफ द यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर. ऐसा क्रेज होता है किसी को? डू यू थिंक रियली ऐसा क्रेज किसी को होता है? अब होता है नहीं होता पता नहीं, बट ई ब्राइट को तो था एंड इट वाज एन अमेजिंग काइंड ऑफ क्रेज. A year and a half later, during his junior year, E. Bright got the idea for his new theory about cell life. It came while he was looking at X-ray photos of the chemical structure of a hormone. Now X-ray photography आ गई यहाँ पे. A year and a half later, during his junior year, what happened? E. Bright को एक idea आया for his new theory about cell life, and it came while he was looking at the X-ray photos of a chemical structure of a hormone. Now, when he saw those photos, जब उन्होंने इन photos को देखा ना, E. Bright didn't shout "Eureka" or even "I have got it," but he believed that along with his findings about insect hormones, the photos gave him the answer to one of the biology puzzles. Now, जब उन्होंने इन फोटोग्राफ्स को देखा तो इसको देख के एक बहुत ही बड़ी चीज क्लियर हो गई थी, बट ई ब्राइट कंट्रोल्ड हिज इमोशंस एंड ही डिडंट शाउट यूरेका और यस आई हैव गॉट इट, बिकॉज बट ही बिलीव्ड दैट अलोंग विद दिस फाइंडिंग्स अबाउट इंसेक्ट हार्मोन्स, जो फोटोज उनको दिए थे, द फोटोज जो उनको मिले थे, इट गेव हिम द आंसर टू वन ऑफ द बायोलॉजी पजल. एंड वो बायोलॉजी पजल क्या था? देखो, हाउ द सेल कैन रीड द ब्लूप्रिंट ऑफ इट्स डीएनए. कैसे आप सेल से उसके डीएनए का ब्लूप्रिंट रीड कर सकते हो? ठीक है, हाउ कैन दिस हैपन? एंड डीएनए इज द सब्सटेंस इन न्यूक्लियस ऑफ अ सेल दैट कंट्रोल्स हेरिडिटी. डीएनए बेसिकली क्या होता है? हमारे न्यूक्लियस जो होता है हमारा सेल का, उसका एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो हमारी हेरिडिटी को कंट्रोल करता है. इट डिटरमाइंस द फॉर्म एंड फंक्शन ऑफ अ सेल. And on the other hand, it determines the form and function of the cell, and thus DNA is the blueprint of life. Thus DNA को हम blueprint for the life कह सकते हैं. Now see, you can see the another project of the E. Bright. E. Bright का next एक और project देख रहे हैं. It's going to be so typical. E. Bright and his college roommate James R. Wong worked all that night drawing pictures and constructing plastic models of the molecules to show how it happened.
Together they later wrote the paper that explained the theory. Now E. Bright along with his college roommate जिनका नाम था James R. Wong, इन्होंने वर्क किया all that night. They were kept on drawing pictures and constructing the plastic models of molecules just to show, सिर्फ ये शो करने के लिए how it could happen कि ये चीजें जो थी वो कैसे हो रही थी. Together they later wrote the paper that explained the theory and which explained the theory of this DNA. They wrote the paper together. Surprising, no one who knew him. Richard E. Bright graduated from Harvard with highest honor. Second in his class of 1,510 students, E. Bright went on to become a graduate student researcher at Harvard Medical School. There he began doing experiments to test his theory. Now surprising, एक बहुत ही सरप्राइजिंग चीज है which no one knew, वो ये था कि रिचर्ड ई ब्राइट जो थे he was graduated, वो graduated थे from the Harvard with the highest honor. He was second in his class with the strength of students 1,510 students. And E. Bright then went on to become the graduate student researcher at the Harvard Medical School, and there he began doing experiments to test his theory. And if the theory proves correct, it will be a big step towards understanding the process of life. Now, if the theory proves correct, so it will be a big step towards understanding the process of a life, and it might also lead to the new ideas for preventing some types of cancer and other diseases. And all of this is possible because E. Bright's scientific curiosity, his high school research into the purpose of the spots on a monarch pupa eventually lead him to his theory about cell life. Now, अगर ये theory correct prove होती है ना, it's going to be a big step. वो बहुत ही big step होगा towards what? It's going to be a big step toward understanding the life process. या आप life process को समझोगे, process of the life, and it might also lead to the new ideas of preventing some type of cancers and other diseases. ठीक है, all of this is possible because जो E. Bright है ना, उनका जो scientific curiosity है उसके कारण ये चीजें possible हो रही हैं, and उनका जो high school research है into the purpose of spots on the monarch pupa eventually lead him to the theory about the cell life. ये जो उनको spots मिले थे ना monarch pupa के ऊपर, वही उनको किस तरफ लेकर के आ गए हैं? They have brought him eventually towards the theory about the cell life. Now, Richard E. Bright has been interested in science since he first began collecting butterflies, but not so deeply that he hasn't time for other interests. E. Bright also became a champion debater and public speaker and a good canoeist and all-around outdoor person. He is also an expert photographer, particularly of nature and scientific exhibition. Now, Richard E. Bright जो थे ना, वो interested थे किसमें? In the science. Since उन्होंने first began किया collect करना butterflies को, but not so deeply. इतना deep नहीं था that he hasn't time for other interests. And E. Bright जो थे वो बहुत ही जल्दी क्या बन गए? He became the champion debater and public speaker बन गए वो, and बहुत ही good canoeist भी बन गए and all round outdoor person बन गए, and he is also an expert photographer. And particularly वो कौन सी फोटोग्राफी करते थे? नेचर एंड जहाँ पे भी साइंटिफिक एग्जिबिट्स होते थे ना, उसकी फोटोग्राफी वो बहुत ही परफेक्टली करते थे. In the high school, Richard E. Bright was a student because learning was easy. He turned a lot of energy towards the debating and model United Nations Club. He also found someone to admire clubs. Mr. Vidhar was the perfect person for me. Then he opened my mind to new ideas, E. Bright said. Now what E. Bright said, E. Bright ने बोला in the जब वो हाई स्कूल में थे ना, रिचर्ड ई ब्राइट जो थे वो बहुत ही एक स्ट्रेट स्टूडेंट थे. ठीक है, ही वॉज अ वेरी स्ट्रेट स्टूडेंट. अब क्या हुआ? उनके स्ट्रेट स्टूडेंट होने से क्या होता है वहां पे? दैट ही वॉज अ वेरी स्ट्रेट स्टूडेंट बिकॉज लर्निंग जो थी वो इजी थी, एंड उन्होंने अपनी बहुत सी एनर्जी जो थी ना, ही टर्न्ड इट टुवर्ड्स द डिबेटिंग एंड मॉडल यूनाइटेड नेशंस क्लब. और उन्होंने साथ ही साथ में फाउंड ये सम पीपल हु आर गोइंग टू admire what? Admire Richard A. Widner.
his social studies teacher and advisor to both clubs, जो उनके टीचर भी थे एंड उनके एडवाइजर भी थे दोनों क्लब्स के लिए. नाउ ये जो थे ना उनके टीचर वॉज अ परफेक्ट पर्सन फॉर मी देन. उन्होंने ओपन किया उनका माइंड टू न्यू आइडियाज, ऐसा रिचर्ड कहते हैं. रिचर्ड वुड ऑलवेज गिव दैट एक्स्ट्रा एफर्ट. मिस्टर वेरर said what pleased me was here was this person who put in 3 or 4 hours at night doing debate research besides doing all his research with butterflies and his other interests. जो रिचर्ड थे ना वो हमेशा एक्स्ट्रा एफर्ट देते थे, ऐसा मिस्टर विजन ने बोला. एंड वो कहते थे आई एम रियली प्लीज्ड विद दिस मैन बिकॉज ये जो पर्सन है ना ये हमेशा अपने 2-3-4 आवर्स जो है नाइट में डिबेट रिसर्च के लिए देते हैं बिसाइड डूइंग ऑल हिज रिसर्च विद द बटरफ्लाइज एंड हिज अदर इंटरेस्ट. रिचर्ड वॉज कॉम्पिटिटिव. रिचर्ड कॉम्पिटिटिव से पता है. मिस्टर वेरर जो थे उन्होंने कंटिन्यू कही अपनी बात कहते हुए बोले वो, बट नॉट इन अ बैड सेंस. बैड सेंस में कॉम्पिटिटिव नहीं थे. ही एक्सप्लेन, उन्होंने ऐसा एक्सप्लेन किया. रिचर्ड वॉजंट इंटरेस्टेड इन विनिंग फॉर विनिंग सेक और विनिंग टू गेट अ प्राइज. रिचर्ड विनिंग में इसलिए इंटरेस्टेड नहीं थे सिर्फ उनको जीतना होता था या उन्हें कोई प्राइज ले हासिल करना होता था, नहीं. रादर ही वॉज विनिंग बिकॉज ही वॉन्टेड टू डू द बेस्ट जॉब ही कुड. वो इसलिए जीतना चाहते थे बिकॉज ही रियली वांटेड टू डू द बेस्ट जॉब ही कुड फॉर द रीजन ही वांट्स टू बी द बेस्ट एंड फॉर द राइट रीजन वो बेस्ट बनना चाहते थे. एंड दैट इज वन ऑफ द इंग्रेडिएंट इन मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट. और यही एक साइंटिस्ट बनने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स रिक्वायर्ड होते हैं ना उनमें से वन ऑफ द इंग्रेडिएंट यही होता है. विद अ फर्स्ट रेट माइंड एंड विद दिस फर्स्ट रेट माइंड एड क्यूरियोसिटी एंड मिक्स इन द विल to win for the right reason. Ebright के पास में क्या थी? Has these qualities. From the time the book The Travel of Monarch 10 opened the world of science to him, Richard Ebright has never lost his scientific curiosity. So and this is one of the ingredient we can say सबसे important ingredient यही होता है किसके लिए in the making of a scientist. And start with a first rate mind. एक स्टार्ट होना फर्स्ट रेट माइंड एंड क्यूरियोसिटी के साथ में एंड मिक्स इन द विल टू विन फॉर द राइट रीजन. और वो मिक्स था विलिंग भी थी उसमें टू विन फॉर द राइट रीजन. ईब्राइट हैज दीज क्वालिटीज. ईब्राइट में ये सारी क्वालिटीज थी. एंड फ्रॉम द टाइम द बुक, और वो समय जब उन्होंने उस बुक को पढ़ा था ना, कौन सी बुक? द ट्रेवल ऑफ मोनार्क 10. उसके बाद में इट हैड ओपन द वर्ल्ड ऑफ साइंस टू हिम एंड रिचर्ड ईब्राइट हैज नेवर लॉस्ट हिज साइंटिफिक क्यूरियोसिटी आफ्टर दैट. Robert W. Peterson. So who has written this interesting piece of scientific theory? That is Robert W. Peterson. So now you understood who Richard was, क्या Richard थे, क्या Richard करते थे, and Richard की theories क्या थी. So we can say that in the later part we understood that a few years later Richard, after getting graduated from the Harvard with the highest honor, उन्होंने secure किया अपना second position in the class of 1510 students. He also became a graduate student researcher at the Harvard Medical School. There उन्होंने experimenting शुरू की अपनी to test his theory and if it would have been successful, it could help in preventing different type of cancers and other diseases. और Richard E. Bright जो है is not just a scientist, he was an all-rounder because he was a good debater, a good public speaker, and he was also a photographer and an outdoor person. His social studies teacher always used to praise him for his will to work hard and do his best and win. Richard had all the qualities that made him a real scientist and he had the curiosity and the first-rate mind. He wanted to win for the right reason, not just to win the fame and the prize. So he wanted to win not for the prizes, not for just winning, but he wanted to win for the right reason. ठीक है, वो सही रीजन के लिए he wanted to win for the right reason. So this was all we can say. It is a story of a very young scientist. It is we can say it's a story of making of a scientist, Richard E. Bright. किस तरीके से उनके अंदर जो क्यूरियोसिटी थी, साइंटिफिक क्यूरियोसिटी कैसे डेवलप हुई, and with the development of this scientific curiosity in him, he never looked back and he continuously kept on doing experiments one after the other and solving the one of the scientific questions one after the other. तो ये चीजें उनकी जो चलती रही and this is written by Robert W. Peterson. Okay? Yes. So moving
Now to the question answer part, just think about it and try to answer it if anyone can answer. How one can become a scientist, an economist, or a historian? Does it simply involve reading many books on a subject or does it involve observing, thinking and doing experiments? Yes. Who wants to answer this? Anyone? It's a very simple question. कौन answer करेगा इसको? Yes, anyone would like to answer it? नो तो यस वी कैन से कि ये जो चीज होती है ना जिसको हम बोलते हैं एक इकोनॉमिस्ट बनना, एक हिस्टोरियन बनना, एक साइंटिस्ट बन जाना, दिस इज रियली गोइंग टू हेल्प अस अ लॉट। ये हमारी बहुत हेल्प करता है ये चीजें, हमें नेम एंड फेम अर्न करने में, हमें बहुत सी ऐसी चीजें करने में जिसको कि हमारा जो पूरा वर्ल्ड होता है वो बिल्कुल अनअवेयर होता है। So for this, but it simply does not involve reading many books on the subject. इसमें सिर्फ आप किसी सब्जेक्ट से बुक्स पढ़ लो इज नॉट सफिशिएंट, ठीक है, वो ही सफिशिएंट नहीं होता है। इट डज इन्वॉल्व अ डीप ऑब्जर्वेशन, आपको इसमें बहुत डीप ऑब्जर्वेशन चाहिए होता है। इट इंक्लूड योर डीप थिंकिंग कैपेसिटी, आपकी उसमें थिंकेबिलिटी बहुत चाहिए। एंड इवन अलोंग विद द थिंकेबिलिटी डूइंग एक्सपेरिमेंट इज नेसेसरी। आप ई ब्राइट के एग्जाम्पल से देख सकते हो कि ई ब्राइट जो थे उन्होंने क्या किया, क्या सिंपली उन्होंने बुक्स पढ़ी और उन्होंने सब कुछ कर लिया? उनको एक बुक मिली थी, वी नो दैट ही हैड अ बुक which opened the field of science for him, but was reading that book sufficient? No, not just reading the book was helpful to him, but along with that उन्हें क्या करना पड़ा? Reading the book just develop a curiosity in him, but उस curiosity को fulfill करने के लिए he kept on doing experiments one after the other. उन्हें बहुत से experiments करने पड़े। So yes, we can say that it involves observing, thinking and doing experiments. Next one is you must have read about cells and DNA in your science books. Correct. Discuss Richard E. Bright's work in the light of what you have studied. If you get an opportunity to work like Richard E. Bright on project and experiment, which field would you like to work and on why? Anyone with this answer? Yes, anyone would like to answer this question? No, I know nobody is going to answer this question. कोई नहीं करने वाला है ना? So yes, we can say that yes, we have read about the cell and DNA in our science books, and E. Bright works जो हैं वो directly related है to a biology. Discoveries जो उन्होंने की cell structure की, this has helped the scientific community to understand the way any organism functions and grows. And this has helped the scientists to discover how disease-causing organisms attack us and grows inside our body. Now, this must have given them an idea to counter a particular disease. DNA carries the blueprint of life and heredity, and they pass the information from one generation to the other. They pass the information from one generation to the other. And if I get an opportunity to work like Richard E. Bright, I would really choose to study diseases. By studying DNA, I may find the ways and means to cure many illnesses. So, is that the opinion of yours too, that if we really get an opportunity to work like Richard E. Bright, what we are going to choose? We are going to choose to study diseases, because by studying the DNA properly, we will find ways and means to cure many illnesses, cure many diseases, which is ultimately going to help other people. So, वो लोग जो किसी बहुत ही डेडली डिजीज से सफर कर रहे हैं, ऑल दोज पीपल जो हम बोलेंगे कि डिजीज से तो सफर कर ही रहे हैं, साथ ही साथ दे डज नॉट हैव, वी कैन से ऐसी कोई मेडिसिन नहीं है विच कैन बी अ लाइफ सेविंग ड्रग फॉर देम। सो आफ्टर डूइंग थॉरो स्टडीज, ये सब स्टडीज करने के बाद में जब हमें क्योर मिल जाएगा ना इन डिजीज के लिए, लाइफ सेविंग ड्रग्स को हम क्रिएट कर लेंगे, सो वी आर गोइंग टू सेव मेनी लाइफ। नाउ टॉक अबाउट इट। Children everywhere wonder about the world around them. The questions they ask are the beginning of scientific inquiry. Given below are some questions that children in India have asked Professor Yashpal and Dr. Rahul as reported in their book Discovered Questions NCERT 2006. जो भी है, what is DNA fingerprints and what are its uses? How do honeybees identify their honeycombs and why does rain fall in drops? Now these are going to be such important questions. ये देखो कितने टिपिकल क्वेश्चंस हैं ये, है ना?
नाउ इसका आंसर हमें कहाँ पे मिलता है? नाउ द आंसर फॉर दिस इज, ये आपकी जो एनसीईआरटी बुक है 2006 की, उसके अंदर इसके क्वेश्चन थे, so you are not going to do this right here. So can you answer this question? You will find Professor Yash Pal and Dr. Rahul Pal's answer on page number 75 on the that book. So उसको आपको नहीं करना है. Then you must have wondered about certain things around you. Share this question with your class and try them and answer them. Now this is simply a class discussion activity we can say. तो वो आप करना चाहें तो you can discuss it. अब class नहीं है तो you can discuss it at your home with your friends, with your siblings, anyone you can discuss, with your parents, with your mother, with your father, anyone. That is, you must have wondered about certain things around you. हमारे आसपास जो चीजें होती हैं हम उन्हें लेके बहुत ही वंडर करते हैं, बहुत ही हैरान होते हैं देख के उन चीजों को, है ना. शेयर दिस क्वेश्चंस विद योर क्लास. आप इन क्वेश्चंस को अपनी क्लास के साथ में शेयर करें. देन ट्राई एंड आंसर देम. आप उन्हें आंसर करने के लिए ट्राई करेंगे. So we can say this is all the chapter that we did, and now quickly कुछ हम points देख लेते हैं. Quickly taking the points, we can say कि whenever a person becomes a scientist, so in making of a scientist, what are the qualities that are required? जो qualities E-Bright में थी, that is a inquisitive sense of reasoning. There should be an amazing sense of reasoning. Competitive curiosity should be there. Competitive curiosity होनी चाहिए. There zeal होना चाहिए कुछ भी करने का. Hard working होना चाहिए. Person has to be hard working. Overlapped by smart work. Hard work तो होना चाहिए, but वो work कैसा होना चाहिए? वो work smart work भी होना चाहिए. And most importantly, strong determinations are the real ingredients or qualities to be a true successful scientist. And most importantly, जो strong determination होती है ना, they are real ingredients or qualities that are to be true. वो true होनी चाहिए and successful scientist के लिए वो requirement होती है. So if you want to be a good scientist, if you want to be a real scientist, तो आपके पास में क्या क्या चीजें developed होनी चाहिए? That आपके अंदर एक sense of reasoning होना चाहिए, आपके पास में competitive curiosity होनी चाहिए, आपके पास में zeal होना चाहिए, आपके पास में hard working होनी चाहिए, and overlapping it आपका जो hard work हो, that has to be a smart work too. And most importantly, आपके अंदर कुछ भी करने का strong determination होना चाहिए, जैसे कि जिसको हम बोलते हैं दृढ़ निश्चय होना होता है. ये सब चीजें जो होना चाहिए, ये सब जो चीजें हैं ना, these all are the real ingredients or the quality to be a true and a successful scientist. Okay, so जो थे हमारे, अब हम क्विकली इनके एक्सपेरिमेंट्स को रिवाइज करते हैं. व्हाट वर द एक्सपेरिमेंट्स एंड प्रोजेक्ट्स जो उन्होंने अंडरटेक किए. E-Bright ने बहुत से प्रोजेक्ट्स एंड बहुत से एक्सपेरिमेंट्स को अंडरटेक किया था. ही स्टार्टेड टू डिस्कवर द कॉज ऑफ वायरल डिजीज. वायरल डिजीज के कॉज को उन्होंने डिस्कवर किया. दैट किल्स नियरली ऑल मोनार्क कैटरपिलर्स. जिन्होंने नियरली सारे मोनार्क कैटरपिलर्स को किल किया था. ही अज्यूम्स दैट बीटल कैन बी द ट्रिगर बिहाइंड इट. वो बोलते कि मोनार्क के ये जो हैं, ये सारे जो मोनार्क कैटरपिलर्स अचानक से एक साथ सारे किल हो जाते हैं, इसके पीछे कौन होगा? बीटल होगा एज अ ट्रिगर. एंड सो ही स्टार्टेड एलिवेशन ऑफ बीटल. And but it does not give him any result. And then he moved to the viceroy butterfly, that he tried to show that these butterflies, these viceroy butterflies, they copy the monarch butterflies. After this, he studied the bright spots, golden spots on the monarch pupa and discovered a new hormone. And after that, he also find out how cells read their DNA. कैसे cells जो हैं वो DNA को read करते हैं. So E-Bright undertake many projects and experiments and he starts to discover the viral. तो उन्होंने क्या क्या किए, क्विकली हम अगर टिप्स पे इनको देखते हैं तो फर्स्ट जो उनका एक्सपेरिमेंट था वो ये था कि वायरल डिजीजेस जो इन्होंने किल किया ऑलमोस्ट ऑल द मोनार्क कैटरपिलर्स. सेकेंडली ये उन्होंने बोला कि इसके पीछे बीटल्स हो सकते हैं, दैट आर द ट्रिगर बिहाइंड इट. Thirdly, then he started to elevate these beetles, but it did not give him any result. And after that, वो monarch butterfly के ऊपर आए कि मोनार्क बटरफ्लाईज जो होती हैं उन्हें कॉपी करती हैं कौन? वाइसरॉय बटरफ्लाईज. दे ट्राई टू कॉपी द मोनार्क बटरफ्लाईज. उनकी ये जो स्टडीज थी, इन्होंने उनको लीड किया टू द नेक्स्ट स्टडी, दैट इज ही स्टडीड द ब्राइट स्पॉट्स दैट आर द गोल्डन स्पॉट्स जो मोनार्क प्यूपा के विंग्स पे मिलते थे. एंड विद दिस ही डिस्कवर्ड अ न्यू हार्मोन. एंड आफ्टर डिस्कवरिंग दिस ही फाइंड आउट हाउ सेल्स रीड द DNA. कि सेल्स जो है वो कैसे DNA को रीड करते हैं, देयर DNA, हाउ द सेल रीड देयर DNA.
So these were the basic, we can say, experiment or projects जो इन्होंने किया. Now the important thing is that रिचर्ड ई ब्राइट जो थे वो ये सब चीजें करते तो थे, वो ये सब चीजें करते थे, बट वो इन सब चीजों को कभी भी सिर्फ जीतने के लिए नहीं करते थे. ठीक है, he did not do all this just to win. There was a great reason behind it, that winning was not compulsory for him. Winning उनके लिए जरूरी नहीं था, but he did what, वो ऐसा इसलिए करते थे because he really wanted to do something real, जो बहुत ही real हो. He wanted to learn to do the real experiments to win a prize. वो सिर्फ एक name, fame या किसी prize के लिए नहीं करते थे, but he learned to do the real experiments to win a prize. Okay, so we can say, and in all this his mother was a great help to him. उनकी जो mother थी ना, वो उनके लिए बहुत great help की, and his mother meant everything to him in all aspects of life. He lost his dad at an early age when he was just studying in a 3rd class standard, and उनकी जो mother थी ना, उन्होंने ही उनको पूरा इस चीज में आगे आने के लिए help किया. She had been a backbone in Richard's life, and for all his success, she always encouraged him. Indeed, she bought him telescopes, microscopes, camera, and many different types of instruments. And however, we can say she was the best part of the Richard's life. वो Richard की life का best part थी. Fine. So उनकी जो mother थी, she was the major source of information to motivate him. And that is why she also bought him a book. That is the name of the book is The Travel of Monarch 10, and it turned out to be a turning point in his life. This book completely transformed his life as it explained how monarch butterflies migrate to Central America. This book helped him to understand the migration of butterflies, and furthermore, this book opened the door of the world of science for this gifted, inquisitive boy who became the great scientist. He learned tagging butterflies and observed their life cycles. And all these experiments, all these discoveries really helped him, gave him an encouragement, and was a source of encouragement and motivation to him. And with this support of his mother, he really became a real scientist, and he was praised by each and everyone, especially his SST teacher used to praise him a lot. And other than that, he was praised by all, and we can say that Richard E. Bright is not just a scientist, he was an all-rounder, he was a good debater, he was a good public speaker, and he was a very good photographer and outdoor person. Okay, so with this I think आपको ये चीजें बहुत अच्छे से clearly ये chapter आपको समझ में आ गया, and if the chapter is clearly understood by you, then just we can say this was all for today's class. And in this class now we have completed this chapter, and now in our next class we'll be starting with a new chapter. Till then you just go through the text, read it well. If any queries you can ask me. Okay, so I hope, but still I hope that there won't be any queries, because this is very well explained, and I hope in the similar way it is well understood by you too. So till then, what you have to do, take care of yourself, stay home, stay safe, and do keep studying.